Hello dear friends. Hello all of you. Am I visible? Hello. Hello dear friends. Am I live now? Thank you. Okay. Now I can see that I am live. Okay. Come to the session. Today we are already late. Yes. Yes. Okay. Hello. Okay. Good evening all of you. Myself is Jyoti Kumari Chaube. Welcome to Net Classes CS and PAPER1. We are doing the TOC classes. Yesterday we have two 37 minute class because of some technical issue. The class got break, and that's why we are taking the class yesterday in two part. And now today is third part of TOC. Okay. Till now we have done this much things. Okay. Formal language, token, this much we have done. Today we have to read DFA. Okay. Everything is clear from yesterday? Are you able to get everything in yesterday class? Have you done your revision? Have you done your revision? Okay, now come to the point. Deterministic finite automata. From today we have to know DFA. We will practice today on DFA. How DFA is working, what is DFA? Welcome Vivek sir. Welcome all of you. Good evening all of you. So deterministic finite automata DFA. DFA में क्या होता है, हम इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग. We are getting a string input and we are passing through finite automata, means machine, and we are getting the output. But DFA is of two types. Okay. DFA, deterministic finite automata. DFA, we can say it finite automata. It is also called finite automata. If anyone is telling you that finite automata, then it is DFA also. Okay. So finite automata is of two types. There are two types of finite automata. First is finite acceptor and second is finite transducer. Okay. Here in finite acceptor we can say that
there are finite automata without output. Without output means there is not a fixed output, not it is guaranteed that output will be there. But in finite transducer means here it is finite automata with output. Okay, with output. Are you getting it? With output. Please be sincere while I am teaching you, because these all things are very important, very important, and please don't get confused. If there is any confusion, then let me know. So it is finite acceptor and it is finite transducer. Okay, finite transducer and finite acceptor. Now finite automata without output. It is finite automata without output. Means finite automata without output means deterministic finite automata, which we are going to practice today. Okay, deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. Okay, finite automata is of two types, finite acceptor and finite transducer, and finite acceptor is of two types, NFA and DFA. Okay, you can see here DFA. एक minute. You can see that this is DFA and this is NFA. 1 minute. Okay, now come to the next point. I have already changed its nib, but also it is. प्रणाम प्रतिभा जी, बहुत खुश रहिए. वेलकम. तो यहाँ क्या है ये देखिए, टाइप देखते जाइए. फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट FA, फाइनाइट एक्सेप्टर जिसका दो टाइप है, DFA और NFA. ओके, NFA एंड DFA, इसमें बहुत थोड़ा सा का डिफरेंस है. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे DFA और NFA दोनों का. उसके बाद यहाँ है फाइनाइट ट्रांसड्यूसर. इसमें है मूरे मशीन एंड मिले मशीन. मूरे एंड मिले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, मूरे मशीन और मिले मशीन. ये विथ आउटपुट होता है और ये विदाउट आउटपुट होता है. ओके, नाउ व्हाट इज मिले मशीन एंड व्हाट इज मूरे मशीन. ओके, तो ट्रांजिशन रिस्पॉन्ड ऑन आउटपुट. आउटपुट पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन आउटपुट. तो सॉरी, आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ इनपुट, आउटपुट सिंबल. ओके, जब यहाँ पे ट्रांजिशन जो है, आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे. आउटपुट डिपेंड करता है स्टेट एंड इनपुट सिंबल. क्योंकि ये विथ आउटपुट है, दिस इज विथ आउटपुट, देन डेफिनेटली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग. सो द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड इनपुट सिंबल. नाउ मूरे मशीन आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ द स्टेट. ओके, keep in mind that it depend on state and it depend on input symbol also, and it is also depend on transition. With transition the output will come, and here is the state, it is associated with state. This is the simple thing, and in main detail we have to study DFA for today, and on Monday we will discuss NFA also. Okay, so what is DFA? These are 4 points, these are rules. So we have to keep in mind that what are the rules. So DFA, deterministic, refer to the uniqueness of the computation.
From here we will get the rule, and on the basis of these points we will practice. Sorry. Okay, so come to the point. Deterministic refers to the uniqueness of the computation, as we have earlierly studied that computation, theory of computation. So deterministic refers to the uniqueness of the computation. Unique, this is unique, and it read an input string, one string symbol at a time. Okay, in deterministic finite automata ये यूनिक होता है, कंप्यूटेशन इसका जो होता है वो यूनिक होता है, और ये रीड करता है एक इनपुट, एन इनपुट स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग सिंबल एट ए टाइम. एक जो है इनपुट सिंबल एक टाइम में इसको वो रीड करता है. अगला पॉइंट देखिए, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द करेंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट. Means there is only one path for specific input. Okay, give focus on input. Means I am inputting the A, if symbol A, then for a single dedicated transition is there. Okay, and from the current state to the next state. For from current state to next state हम लोग को करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, तो उसके लिए एक ट्रांजिशन एक सिंबल को डेडिकेटेड होता है. ये अभी मैं बोल रही हूँ, उसको बस सुनिए, अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ये जब ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो वो सारा क्लियर हो जाएगा. नाउ DFA डज नॉट एक्सेप्ट द नल मूव. DFA कैन नॉट चेंज स्टेट विदाउट एनी इनपुट कैरेक्टर. मीन्स कि DFA में कोई ना कोई सिंबल चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम नल मूव कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई ना कोई सिंबल चाहिए और हम उसको मूव करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं. DFA कैन कंटेन, मीन्स देखिए ये क्यों पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट क्यों है. DFA डज नॉट एक्सेप्ट नल मूव, मीन्स देयर इज ए यूनिक ट्रांजिशन फॉर एवरी सिंबल. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट if there is no symbol then there is no transition. Okay, is it also clear? So DFA does not accept the null move. DFA cannot change state without any input character. जब तक उसमें एक इनपुट कैरेक्टर नहीं होगा DFA अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा. और स्टेट ये चेंज करता है, एक सिंबल को डेडिकेटेड ट्रांजिशन मिलता है, इसीलिए ये विदाउट नल मूव में नहीं कर सकता है. विदाउट एनी सिंबल वो अपने स्टेट से आगे जाएगा ही नहीं, है ना. DFA कैन कंटेन मल्टीपल फाइनल स्टेट्स. ये मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल होते हैं या ऑल भी होते हैं. ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है. DFA कैन कंटेन मल्टीपल फाइनल स्टेट. इट इज़ यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस इन कंपाइलर. ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. तो इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, और ये आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है. नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, क्योंकि अब नोट्स लंबा होता जाएगा, डेली लंबा होता जाएगा. अब आइए हम DFA पे आते हैं. NFA देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा मैम ने NFA नहीं डिफाइन किया. NFA मैंने इसलिए नहीं डिफाइन किया क्योंकि NFA हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे और उसको भी DFA की तरह डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. मिले मुरे को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन DFA NFA को पढ़ना है. तो हम DFA का यहाँ समझ लिए रूल, कैसे उसका ट्रांजिशन होता है, कैसे उसका मशीन बनता है, ऑटोमेटा कैसे बनेगा, उसके लिए ये सारा रूल है, ठीक है. हाउ वी विल मेक ऑटोमेटा, दिस ऑल रूल्स आर फॉर द ऑटोमेटा. ओके, सो कम टू द डिटेल ऑफ DFA. Deterministic finite automata, we can also say that finite automata. Okay, DFA, for every input symbol of alphabet there is exactly one transition for every state of finite automata is called a DFA. मैंने पहले भी बता दिया है. DFA covers transition for all valid and invalid string in the given regular language. लैंग्वेज में जो है उसके लिए वो ट्रांजिशन देगा.
अब ये एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाद की बात होती है, वो आगे जाके पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम जो भी रास्ता मिल रहा है वहाँ चल रहे हैं, हमको जो भी सिंबल है उस पर हम ट्रांजिशन दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी वैलिड स्ट्रिंग DFA reaches to one of its final state, and for every invalid string it reaches to non final state. Okay, means कि या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, for every valid string DFA reaches to one of its final state, means कि multiple होते हैं ना, multiple, there are multiple final states, that's why we are telling that DFA can reaches to one of its final state, and for every invalid string it reaches to non final state. Okay, so come to the language. Now this is the method how to represent these all rules, and from yesterday we are learning all the rules, and now it is the time to implement. Okay, so come to the machine. What is machine? Machine, here we are making a machine for a to the power n. a की वैल्यू a to the power n means कि a की वैल्यू a to the power 0, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, a to the power dash 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 dash, a to the power n, वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया लैंग्वेज। अब हम इसका मशीन कैसे बनाएंगे? दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटा। ओके, ये हम DFA बना रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस इज मशीन। और यहाँ हम चेक करेंगे कि वो लैंग्वेज इस मशीन को, मतलब ये मशीन उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, और उसके बेस पे हमें पता चलेगा। अगर DFA को ये एक्सेप्ट कर रहा है, DFA में ये लैंग्वेज अगर एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि ये लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, ये रेगुलर लैंग्वेज है। तो हम यहाँ आते हैं a to the power n। ये तो मैं मशीन बनाना बता रही हूँ, आगे हम लोग इसको चेक करेंगे, स्ट्रिंग को चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक मशीन हम लोग पहले ही बना दे रहे हैं, अपने हिसाब से यहाँ फिट कर दे रहे हैं। तो मशीन में क्या है कि ये Q0 है, मैंने आपको बताया था Q होता है कि, और सारे स्टेट का जो कम्बिनेशन होता है वो कैपिटल Q से डिनोट होता है। तो यहाँ Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। दिस इज द मेथड हाउ टू रिप्रेजेंट Qs। ओके, एंड these are the states, and this is transition A is transition. I am trying to use pen again. Okay, so pen is not working. ओके, लेज़र पॉइंटर से ही हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। सर यहाँ देखिए, मिले और मुरे मशीन में मेन डिफरेंस क्या है कि मिले में ट्रांजिशन और स्टेट दोनों का यूज होता है, दोनों को एसोसिएट करता है आउटपुट। लेकिन मुरे में क्या है कि ये स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट को एसोसिएट करता है। ओके, मेन डिफरेंस यही है। ट्रांजिशन जो है ये स्टेट को एसोसिएट करता है, और ये स्टेट और इनपुट सिंबल और ट्रांजिशन सारे पे डिपेंड करता है इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट केवल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब हाउ मेनी स्टेट्स, देयर आर 5 स्टेट्स। ओके, in this question I can explain you that according to this machine there are 5 states. okay, तो मुरे जो है बस स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, मुरे विल डिपेंड ऑन स्टेट्स, बट आउटपुट ऑफ मुरे इज डिपेंड ऑन स्टेट्स। बट इन मिले दिस विल आल्सो डिपेंड ऑन स्टेट,
input symbol and transition from where to where, this is transition table. ओके, तो मिले में ये सारे चीज पे डिपेंड करता है. जो आउटपुट आता है हमारा, आउटपुट विल डिपेंड ऑन ट्रांजिशन, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द इनपुट सिंबल. बट इन मुरे you can see here, but in Mure it is also depend on states, means we have to see only the state. Is it clear, sir? Please let me know, and if any query is there, please ask in live class, because मतलब बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए बीच में कोई डाउट, और हो तो यहीं तुरंत के तुरंत हम लोग इंस्टेंट इसको क्लियर कर लें. ओके सर, is it clear? Then please write in chat box. मेजर डिफरेंस इज मिले और मुरे में क्या है, देख लीजिए. मुरे में क्या है कि वो केवल स्टेट को देखता है, स्टेट ओनली, इट सी ओनली द स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 10, how many. But मिले machine will meet the transition, the state, the input symbol, output will depend on all this. Okay, so it is more detail, but Mure is only checking the states, and we will learn it in detail, but this is not too much required in our syllabus, but we will study, learn according to our need, according to our syllabus. Okay, thank you, sir. So now come to the machine, automata. This is the automata, and Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, all these are the states, only states. Okay, please see it carefully, listen it carefully. These are the states. But can you tell me that how many final states are there, how many non-final states are there? Okay, can you tell me how many final states and how many non-final states are there? It will take some time, so I am explaining further. Okay, Q0 with double line, it is final state. This is also with double circle, it is also final state, it is also final state, it is also final state. But Q3, it is not final.